अब मैं दुआ का आखिरी हिस्सा बोलने वाली हूँ। आप सब लोग खामोशी से सुनना और बात नहीं करना और अपने रब से अपनी मुकम्मल शिफा अभी इसी वक्त कबूल फरमाना। शिफा मिलने के बाद खुदा का शुक्र और तारीफ करना, मजीद बरकतें हासिल करने के लिए दूसरों को भी बताना। In the name of living God, I bind and take charge over every sickness, disease, trauma, infirmity, iniquity, and command you to leave right now and never return. Rett syndrome, command the spirit of Rett syndrome to go. Genetic disorders to be healed. Neurodevelopment of gray matter of the brain to be healed and whole. All growth developmental damages caused by Rett syndrome to be healed and proper growth of the body to be restored. Gastrointestinal disorders to go. Colon to function normally. Repetitive hand movements to stop. Command the electrical and magnetic frequencies to be in harmony and balance. Microcephaly. Command the spirit of microcephaly to go. Command a new normal-sized cranium and a new brain. Command total restoration of the nervous system. Command any chromosomal abnormalities to be healed. Command the genes to be healed and whole. Cast out the spirit of trauma and speak the peace of God into their heart and soul. Command the body to grow normally. Epilepsy. Cast out the spirit of epilepsy. Command electrical and magnetic frequencies to be in harmony and balance. Command new brain tissues to develop and work normally. Command all the tissues, nerves, and vessels to function normally. Seizures. Curse the spirit and command it to go. Command the electrical and magnetic frequencies to be in harmony and balance and function normally. Command a new brain. Scoliosis. Cast out. Command the bones in the back, the ribs, the supportive structures of the body to come into normal and perfect alignment. Command the muscles, tendons, and ligaments to strengthen. Legs grow, arms grow, pelvis rotate into proper alignment. Body to be whole from the top of the head to the tip of the toes in the name of living God. Ameen. आमीन सुम्मा आमीन। ये दुआ स्ट्रेस और फिक्र से शिफा के लिए है। आप सब मेरे पीछे पीछे बोलिए। प्यारे जिंदा खुदा वदूद या हय्यू या कय्यूम, मैं हर एक को माफ करता हूँ और मैं अपने तमाम फिक्र, तकलीफ़ें, घबराहटें, गुस्सा और ज़रूरतें आपके सामने पेश करता हूँ। मैं इन सब मसलों का कुछ नहीं कर सकता हूँ और आप सब कुछ कर सकते हो। लिहाजा आप मुझे अपना अमन और सुकून और खुशी दीजिए। आपका शुक्र करता हूँ मेरे प्यारे जिंदा खुदा। आमीन।